Good morning, students. It is class number 6 of chapter number 5, which is complex number. In previous classes, we had done the standard form of complex number and the modulus and argument of complex numbers, and the polar form of complex number as well as we had done the quadratic equation using complex numbers. And now as you know that in the pandemic COVID-19 situation, CBSE has reduced some syllabus from every topic. In this topic, CBSE has reduced two subtopics, which are polar form of complex number and the square root of complex number. But these are not permanent deletion from the syllabus, and these are important topics for the future point of view. So I don't want to remove these chapters, and I will do these topics as well. And since these are very important for competitive competitive examination point of view, right? So now let us see the square root of complex number. Here it is, example number 12. Actually, it was added in a supplementary portion of the complex number, which is given at the last of your test book. So that is page number. This is given in page number. This is given in our test book, page number 474. At the end of your test book, right? So example number 12 is, we have to get the square root of minus 7 minus 24 iota. So let us assume that let square root of minus 7 minus 24 iota is equal to a plus iota b. Clear? Now squaring both sides, we get minus 7 minus 24 iota is equal to a plus iota b to the whole square. Now it is minus 7 minus 24 iota is equal to a square, or plus iota square b square, so minus b square and plus 2ab iota. Now comparing the real and imaginary parts on both sides. So we get minus 7. Real part of this side is minus 7. So minus 7 is equal to a square minus b square, and minus 24 is equal to 2ab. Clear? Then we have two equations here. We have two equations because we have assumed that minus 7 minus 24 iota is a plus iota b. It means there are two variables a and b. Basically we have to get the values of a and b in this situation, in this question, right? So here it is, there are two variables and two equations, so we can solve these two. But what will be the simpler method to solve these two equations? Let us see. As you know that a square plus b square to the whole square is equal to a square minus b square to the whole square and plus 4a square b square. Clear? You have to use this formula because of a plus b to the whole square is a minus b to the whole square, plus 4ab. Since if you expand right hand side of this equation, it becomes a square plus b square minus 2ab plus 4ab. So which will becomes a square plus b square plus 2ab, so which is equal to the a plus b to the whole square. That's why this
equation can be written as a square plus b square to the whole square is equal to a square minus b square to the whole square plus 4 square b square. Now replace the values. Now it becomes a square plus b square to the whole square. A square minus b square is minus 7 square, and it can be written as 2ab to the whole square, right? And 2ab is minus 24, so this is 49 plus minus 24 to the square. So 49 plus 576, it is 625, right? So that means a square plus b square to the whole square is equal to 625, which means a square plus b square is equal to plus minus 25. But in this case minus will be rejected, since a square plus b square both are perfect square, and the sum of the perfect squares cannot be negative. So that's why only we consider as positive, right? A square plus b square is 25. So now it is equation number 1, it is equation number 2. Solve these two questions from first and second. We get a square minus b square is equal to minus 7, and a square plus b square is equal to 25. Solving these two, cancel out by adding. 2a square is equal to minus 16 18, and a square is equal to 9. So a is equal to plus minus 3. Yes, a is equal to plus minus 3. Now substitute this value in equation number 2. So from 2 we get, from 2, a square 9 plus b square is equal to 25. So b square is equal to 16, b is equal to plus minus 4. So that means a is plus minus 3 and b is plus minus 4. Now you will have to keep just one thing in mind, that since 2ab, यानी कि प्रोडक्ट 2ab is equal to minus 24, and what will be the ab? ab will be minus 12, right? तो यानी कि in this case प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स ए एंड बी इज नेगेटिव. तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, तो वो कब पॉसिबल है? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होता है जब उन दोनों में से कोई सा एक नंबर नेगेटिव होगा, यानी कि या तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, या एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए. तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज, देयरफॉर from first square root of minus 7 minus 24 iota is, तो मैंने बताया ना कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है नेगेटिव है. तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब होता है? जब उन दोनों में से एक नेगेटिव होगा. तो अगर मैं a को पॉजिटिव लूँगा तो b को नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो यानी कि ये हो जाएगा, जब मैं a को, तो 3 माइनस 4 आयोटा, और अब मैंने इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, और माइनस 3 प्लस 4 आयोटा. तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 3 माइनस 4 आयोटा और माइनस 3 प्लस 4 आयोटा. Yes, let us see one more example of this complex number. Suppose we have to get square root of minus iota, right? So let square root of minus iota is equal to a plus iota b. Squaring both sides. So minus iota to the square is equal to a plus iota b to the square, right? So this is minus iota is equal to a square minus b square plus 2ab iota. Now comparing
real and imaginary parts on both sides. तो what is real part? Left hand side a square minus b square, and in right hand side minus 1 is equal to 2ab, right? Now again use that formula, which was a square plus b square to the whole square is equal to a square minus b square to the whole square plus 4a square b square. This was the formula, right? अब a plus a square plus b square to the whole square, which is a square minus b square, that is 0, और plus 4a square b square is 1. It can be written as 2ab to the whole square. 2ab to the whole square is minus 1 to the square, which is 1. So that means a square plus b square is equal to plus minus 2 होना चाहिए था, but only 2, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों स्क्वायर है और स्क्वायर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2. तो इट वाज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकेंड, इट इज थर्ड. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2. एड the 2a square is equal to 2, a square is equal to 1, so which implies a is equal to plus minus 1. Now from third we get 1 plus b square is equal to 2, so b square is equal to again 1, which implies b is equal to plus minus 1. Hence it is therefore स्क्वायर रूट ऑफ. अब इसमें देखेंगे आप कि प्लस माइनस कैसे. देखो आपने फिर देखा कि 2ab का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट? नहीं, पॉसिबल तभी हो सकता है जब उनमें से एक पॉजिटिव हो. तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी. तो ए के लिए अगर मैं ए को प्लस लूँगा 1 माइनस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा, right? So this was minus iota square root of minus iota, right? Now you have to do exercise 5.4. Do exercise 5.4, right? And you have to send me question number 1, 2 and 6. You have to send me 1, 2, 3 and 6. You have to send me these 4 questions. Thank you very much for this class. Yes friends, ये एग्जाम्पल जो हमने अभी किया ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि माइनस 2ab इजकल टू माइनस 1 था. तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2ab टू द स्क्वायर, और 2ab टू दी स्क्वायर, 2ab की वैल्यू माइनस 1 थी, तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 1. तो यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए था, जबकि मैंने 4 लिख दिया था ये. तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 0 हो जाएगा जब हम इसको ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1 आ गया यहाँ पर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 0 जो हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 से, और ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1, तो 2a स्क्वायर इजकल टू 1, ए स्क्वायर इजकल टू 1/2, ए स्क्वायर टू प्लस माइनस 1/√2. तो जब हम थर्ड में पुट करेंगे तो दैट इज 1/2, बी स्क्वायर इजकल टू 1, बी स्क्वायर इजकल टू 1/2, बी स्क्वायर टू प्लस माइनस 1/√2. तो अब मैंने बताया था कि ये प्लस माइनस हम कैसे डिसाइड करेंगे, इस वाले साइन से. इससे देखेंगे कि जैसे 2ab है, 2ab का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, तो यानी कि 2 नंबर हैं ए और बी, इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब होता है, जब उनमें से कोई सा एक नंबर जो है नेगेटिव हो. तो जब मैं ए प्लस आयोटा बी होता है, तो जब मैं ए को पॉजिटिव लूँगा तो बी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और जब ए को नेगेटिव लेंगे तो बी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा. तो दैट्स वाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस आयोटा इज 1/√2 माइनस आयोटा/√2, और ये और माइनस 1/√2 और प्लस आयोटा/√2. दैट्स इट. तो नाउ यू हैव टू डू
these questions as well, 1, 2, 3 and 6.